you guys are doing well and taking care of your health as well. I'm your Kasturika Ma'am and I will be teaching you English for both 9 and 10 standard. Now, as you're going to see it from the thumbnail itself, today we are going to discuss about the top expected model questions and the tense questions. Okay, so I'm going to provide you, okay, the basic rules regarding the tense and also basic rules regarding while you just get the very questions regarding to fill in the blanks with appropriate models. So I am going to teach you, okay, in this class you are going to learn about how you should have, you should see. The thing is, I am using models right now, right? So basically models are nothing but when you're, you will get like a kind of like somewhere this is mandatory. You have heard about this term, right? I hope you have heard about this term a lot, about this thing is mandatory for you. So people often use these very words like you should, you must follow. So we are obliged to, as a human beings, we are obliged to follow some rules and regulations whenever we are going to enter in classrooms, whenever we are going to sit for exam, isn't it? Okay, so as recently, recently our APSC, the result has been declared, right? So you can see, if you ever go through somewhere the interviews, okay, the interviews regarding how the aspirants, they just present themselves in a proper way, the proper dress code and all things. So the thing is, you should do that. Alright, so they are obliged to do so. Not obliged, actually. Somewhere it feels like to maintain a kind of a discipline, okay. We must follow this kind of rules. So these are the things, right? So बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप लोगों का बोर्ड्स का एग्जाम अभी शुरू नहीं होने वाले. आप लोगों का बोर्ड्स का एग्जाम चल रहा है, isn't it? And 21st February को आप लोगों का क्या है, इंग्लिश का एग्जाम है. सो बेसिकली वहां पे जो ग्रामर पोर्शन है, फ्रॉम द ग्रामर पोर्शन फ्रॉम योर प्रेस्क्राइब सिलेबस यू हैव दिस मॉडल्स एंड यू हैव द टेंस क्वेश्चंस, राइट? एट द टेंसर क्वेश्चंसो আছে আৰু লগতে কিহৰ আছে models or questions paba. So basically I hope from this class onwards, okay, I hope, and I'm just trying to assure you my dear students, and definitely I suggest you to watch this video as soon as possible so that your concept will be clear. As our motto, the very motto of our X school is that we just try to somewhere make the concept clear for you guys. All right, we put that much of effort so that your concept will be clear. All right, so I'm going to provide you lots and lots of questions, okay, regarding these models based on your PYQs. You know what is PYQs? That is previous year questions, okay. Okay, so I'm going to provide you those questions as well so that it will be quite familiar for you whenever you are going to appear for the English exam. The moment you just turn the pages of your question paper, so I want to see the immediate smile on your face. All right, ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ये सब तो सवाल आप मैम ने हम लोग को करवाया, मतलब अब ये सब तो मैम ने हमको प्रैक्टिस करवाई थी, isn't it? So basically क्या होगा, आप लोगों को ये कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले से ही क्या है हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है. सो डेफिनेटली इट विल बी सो कॉमन फॉर यू. सो फॉर दैट आप लोगों को शायद वो देख के क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप लोगों को ये लगे कि ये तो पूरा कॉमन है. सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दोज एंटायर ईच एंड डिटेल्स, ओके, एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द डिटेल्स, ओके, द डिटेलिंग. आई एम गोइंग टू टीच यू इन डिटेल रिगार्डिंग दिस वेरी कंसेप्ट ऑफ मॉडल्स एज वेल एंड टेंस क्वेश्चंस एज वेल. टेंस के बारे में भी आप लोगों को सिखाया जाएगा इन क्लास में, और उससे क्या होगा, आप लोगों को मॉडल्स के बारे में भी कुछ सिखाया जाएगा ताकि आप लोगों को ये लगे कि मैं ये सब इस क्लास के बाद मैं आपको एश्योर करती हूँ, ठीक है, आप लोगों को ये लगेगा स्टूडेंट्स की हाँ ये तो बहुत कॉमन है, मैम ने तो हम लोग को ये प्रैक्टिस कराई थी, isn't it? So basically it will be so easier for you. All right, so let's begin the class. Okay. Okay, so most common models. Okay, first of all, what are the models? Okay, first of all, what are the models? When you can do that, you should do that. So there will be some rules and regulations you need to follow. Then models are the kind of we use this kind of words to stress on something, putting stress on something in a sentence. All right, so देखिए कैसा होता है कि most common models like can,
I can do this. All right. So could, तुम लोग वहां पे जा सकते थे ना, तो क्यों नहीं गए? You could have done this. तुम खुद अकेले कर सकते थे, हमने क्यों नहीं किया? So वो these are the things. All right. So could, may, okay, may I. So जब आप लोगों को कहीं पे परमिशन लेना हो तो हम लोग ये वर्ड पुट करते हैं, ठीक है? So I'm going to, so that's what I'm telling you from the very beginning of my class कि इस क्लास के जरिए आप लोगों को इसका पैटर्न्स भी समझ में आ जाएगा. What are the common patterns regarding the models? अगर पहले, इससे पहले आप लोगों का मॉडल्स रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आप लोगों का मॉडल नॉट एक्जैक्टली मॉडल्स रिलेटेड क्वेश्चंस, if you have ever, all right, so the thing is ইয়াৰ আগতে তোমালোকে হয়তো বহুতৰে যেতিয়ালৈকে মডেলছ ৰিলেটেড মডেলছ মানে কি হয় যদি এতিয়ালৈকে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, তো ডেফিনেটলি দিস ভিডিও ইজ গোইং টু বি এ গেম চেঞ্জাৰ ফৰ ইউ. অল ৰাইট, যে কি হয় এই ভিডিওটোৰ যোগেদি তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, মডেলছৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন এনসাৰ্ছবোৰ বুজাৰ লগতে, ঠিক আছে, ইয়াত কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে কি হয় মডেলছৰ ইউজ কৰিব পাৰো আৰু যাতে মডেলছৰ প্ৰপাৰ ইউজ. The thing is, today in this class we are going to discuss about the most common models and the common patterns, okay, and the common patterns regarding the models as well, so that regarding this very concept of models, so that regarding this your ideas will be clear. Okay, মই কি কৈছো জানা নাই তোমালোকক যে আজি ক্লাছৰ যোগেদি ঠিক আছে, তোমালোকে যদি যি সকল ষ্টুডেন্টে এতিয়ালৈকে I know that majority of the students somewhere they hesitate to raise your voice towards that my concept is not clear or something like that. You just don't have to hesitate, okay. The thing is তোমালোকৰ ইয়াৰ যোগেদি কি হয়, যদি যাৰ এতিয়ালৈকে কি হয় concept clear হোৱা নাছিলে models or related, then definitely this video is going to be a game changer for you. আজিৰ পৰা তোমালোকৰ গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু তাৰ বাবে মডেলছত কোনটো এটা সেন্টেন্সত কোনটো प्रॉपर मॉडल्स यूज होगा. ऑलराइट, सो सपोज आप लोगों को एक सेंटेंस मिल रहा है, ठीक है, उस सेंटेंस में एक वाक्य में कौन सा मॉडल आपको यूज करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर मॉडल. सो आप इसलिए आप लोगों को उसके पैटर्न के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द कॉमन पैटर्न्स रिगार्डिंग द मॉडल्स. Permission and polite request. Use of may versus can versus could. Okay, use of may. Okay, use of may जब polite way में होता है, whenever you are just trying to enter in a particular classroom, suppose the teachers has already entered in that classroom and you are just outside of the classroom, how you are going to enter in that particular, definitely you are going to ask that particular teacher, right? All right, so basically in polite way you have to ask that particular teacher, right? So you have to ask how you are going to ask that you now you just want to enter the particular classroom, definitely you are going to use may, right? May I come in, isn't it? May I come in, sir, isn't it? So may somewhere in context of may, हम लोग may कहाँ पे यूज करते हैं, जब भी किसी को polite way परमिशन चाहिए होती है, हम लोगों को किसी का परमिशन चाहिए होता है, ठीक है, और एट द सेम टाइम हम पोलाइट वे किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, तो उसी वक्त पे हम लोग may यूज कर सकते हैं, या फिर can versus could. Okay, can I, may I. All right, समझ में आ गया. The next one is obligation. Obligation is the shift from should, suggestion to must, strong necessity. That's what I have mentioned already from the very beginning of my class. What they are in a kind of a in human society we are obliged to follow some rules and regulations. All right, okay, so basically this obligation, when it comes to like obligations or something like that, okay, obligation or something like that, that shift from should, so that is suggestion. Should is something like if you are going to provide some suggestions to someone, you should do that, okay, you should go for that. Somewhere it's about like it's a kind of a suggestion. Should implies to suggestion. All right, this very model should, okay, it implies to what? It implies to suggestion. All right, it implies to suggestion, right? Somewhere suppose these days this is quite obvious that you have seen the lots and lots of Insta reels regarding this kind of food bloggings and all this stuff, isn't it? So it's not about the food blogging. Suppose you just want to explore a particular kind of stall, you just want to explore the famous biryani spots near the town. Suppose you are very new to that particular place, then definitely you are going to ask about that famous spots. तो
to someone who is quite expert in these things, right? So you want his suggestion, then definitely how he or she is going to respond that you should visit that place, you should go for this. While in Delhi, while in Guwahati, you should explore for a specific kind of chai, for specific kind of biryani, for specific kind of kind of like chatpata. Then definitely you must, or not you must exactly, you should go for that. You should go for it. You should give it a thought. So these are the kind of, it's a kind of a suggestion. हम लोग किसी को suggestion देते कि हाँ अगर तू यहाँ पे आया है तो definitely वहाँ का चाय एक बार try करके देख. You should. ये वाला मॉडल हम शुड, ये जो मॉडल है ये वाला मॉडल हम हमेशा किसी को सजेशन देने के लिए क्या करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं. ठीक है, clear? I hope it's clear for you. Then it's come to must. Must is somewhere, it's a strong necessity. Must is somewhere when you can't just skip that part. You can't, you must. So somewhere you are just putting that entire stress to a particular person that you must do that, you must perform that. This is must. ये तो होना ही चाहिए. It's a necessity. So when it comes to necessity, we use this very model, that is must. All right. Then next is probability. Probability, it's like the degrees of certainty using might. How? Using might. Okay, the degrees of certainty. Suppose it's certain. Suppose it's not certain. He might. So you might. She might. Okay, so these are the things. All right, the degrees of certainty using might, and low and may, that is medium. So might is something where the like probability is low, the degrees of certainty using might is low, and may is quite medium. Okay, may is he may be or may not be. We use this, right? Maybe somewhere it's like it's quite uncertain, but somewhere yes, maybe you are putting somewhere the 80% of like stress over it. Okay, so may is like medium, and somewhere this the degrees of certainty using might is kind of in bracket. I use this very kind of this probability kind of thing. I use this law. Okay, so I hope it's clear for you. I suggest you to take a screenshot of take the screenshot of it. All right. I'm moving on to the next slide. That is. Okay, see, it's a previous year questions, PYQs with answers. Here, as from the very beginning of the class, I have mentioned it that I'm going to discuss in this class, I'm going to discuss some of the most important PYQs, and if you follow this up, then definitely it will be a game changer for you. Alright, so here is a compilation of model-based questions from past CBSE board exams and sample papers. Alright, so I have collected all these questions and I have provided the answers along with them. So that the answers will be like the questions will be common for you, so that you will be able to answer those questions regarding models. All right. So section A, that is gap filling. You will get this how in your CBSE boards, in your English paper, how they are going to ask you the questions regarding the models. So I am providing you the patterns as well, isn't it? So fill in the blanks with the appropriate model. So the question is drivers. Here is the you will be given the, like this in this way. You will be given the sentence in that way. So now you just have to fill in the blanks with appropriate models. All right, so the question is drivers dash over here must should stop when the traffic light turns red. Okay, remember here you get this must and should. Remember about these factors. Hence I suggested you to take the screenshot of it. When we just use must is somewhere when it's strong necessity. Somewhere this sentence indicates this strong necessity of something. Strong necessity. So these are the rules you have to follow while driving on the road, isn't it? So these are the rules that you must follow. So this is a necessity. So drivers, so must, what will be the correct answer? It will be must or should. Stop when the traffic light turns red. So you should stop. Okay, should is something that's like it's a kind of a like suggestion only. But here the questions here in that particular sentence, this particular sentence is not somewhere it's providing you the suggestion or something like that. This is a necessity. Must is necessity, isn't it? So when in traffic, while you are stuck in the traffic road,
you just get the you just get the very signal of this traffic signal is red. You just can't just ignore and just go for it. No, it's not like that. So basically that correct answer will be must, because it indicates a legal obligation. All right, so it's a necessity, and when it comes to necessity we use this very model, that is must. I hope it's clear for you. The next question is you dash over there could borrow my book if you return it tomorrow. If you return it tomorrow, so what will be the answer? You ইয়াতে এটা dash আছে, তাৰপিছত কি আছে can বা could আছে, borrow my book if you return it tomorrow. যদি তুমি কাইলৈ মোৰ কিতাপখন ঘূৰাই দিব পাৰা তেনেহলে তুমি মোৰ কিতাপখন লৈ যাব পাৰা আজিৰ বাবে. So it's not could, definitely, because it's talk about the future as well. So here we can use this. Can will be the correct answer. See, the answer is can. It indicates giving permission. You can. While giving someone permission, you can use this very model, that is can. All right. I hope it's clear for you. I hope it's clear for you. Then next slide. This question is, it is asked in CBSE 2022 question paper. All right, it's a days over there. Will shall definitely help you with your project tonight. Definitely will. It's I will. We often use will with shall. You can also use shall with I, but why we use here with? That is it shows a strong promise, that is determination. So determination. I will definitely help you with your project tonight. Okay, I hope it's clear for you. মই আশা কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা, ঠিক আছে? Okay, next question লৈ আহিছো আমি. The sky is cloudy. Okay, the sky is cloudy. খুব বেছি ডাৱৰীয়া হৈ আছে আকাশখন. The sky is cloudy. It might হ'ব নে must হ'ব? It might rain today. কি হ'ব? CBSE 2018 ত আহিছিলে. It indicates, remember, it indicates possibility. What we have got, what have we got? That is probability. When it comes to probability, what are the models that we use? Okay, so when it comes to probability, the degrees of certainty using might is low and may is medium. All right, in case of probability we use this very model, that is one is might and one is may and another one is might. All right, so here definitely the sky is cloudy, as কি হয় মানে কি হয় গোটে আকাশখন ডাৱৰীয়া হৈ আছে তেনেহলে বৰষুণ পৰিব পাৰে, নপৰিব পাৰে. So এই probability ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰো? might ইউজ কৰো, ঠিক আছে? It indicates possibility. Okay, কাৰণ ইয়াতে might আছিলে আৰু must আছিলে. must তো কেতিয়াও নহয়, যদি এই দুইটা থাকে তেনে must কেতিয়া হয়? must when it comes to necessity, but it's not necessary, because here it indicates the very theme of possibility, right? Possibility and probability, right? Hence might will be the correct answer for this question. All right, might. All right, clear? I hope it's clear for you. The next one is, here's the question: we dash ought to or can respect our elders. So definitely here when it comes to morality, when we use this very model ought, okay, we use this very model ought when it indicates like moral duty. Do remember this factor when it comes to moral duty, and you'll get this very option of ought to and can. Then definitely it will be quite clear for you. You will be provided the options, right? So we ought to respect our elders. All right, so here the correct answer will be ought to. I hope it's clear for you. All right, I hope it's clear for you. Okay, now let's move on to the next slide. Here, okay, section B, that is error connection. You may get this very questions. And see, the thing is, in this class I have discussed about the fill in the blanks kind of questions regarding these models, and also you may get this. Okay, so you may get this in that way only. So the thing is, here are the sentence, and here you have to find out the error. You have to find out error correction. You have to find out the errors from the particular table. Then how you are going to somewhere put the correct answer, isn't it? So you can consult the doctor immediately. Error is, what is the error? That is can, because it's like must. So you have to use the correction. Will be either it will be should, or it will be it's a kind of a, if you are using it in form of like suggestion, you can use this should. And when it comes to necessity, definitely you must, because someone is sick
right? Because someone is sick and I'm not going to, oh, now, yes, definitely I'm going to tell them that you should rest or something like that. See, the thing is I'm using here you should rest because it's a kind of a suggestion. But when it comes to must, that while taking medicines or something like that, you have to use must. All right. So the thing is, you can consult a doctor immediately. Somewhere it's not, it somewhere indicates a suggestion, but at the same time, it's a necessity as well. So the correction will be, it's not, the error is you can't use here can, because can is the, what to say, can to use কৰিলে direct ভুলে হৈ যাব তোমাৰ correction to তোমালোকক error correction কৰিব দিব পাৰে ঠিক আছে so definitely ইয়াতে should লিখিব পাৰা নহলে তোমালোকে must লিখিব পাৰা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট আহিছো would I come in sir would I come in এনেকৈ তোমালোকক সেন্টেন্স বোৰ দিব ইয়াতে তোমালোকক ক'ব যে ইয়াতে কোনটো মডেল পুট কৰিব লাগিব ইয়াত কি ভুল হৈ আছে সেন্টেন্স so error correction হিচাপত দিব পাৰে so would I come in কেতিয়াও নহয় পাৰমিশনৰ ক্ষেত্ৰত হয় কিছুমান কিন্তু if you don't mind বুলি পেলে কয় হয় না কিন্তু উটটো কেতিয়াও নহয় সো আমি যেতিয়া কেতিয়াবা কি হয় পারমিশন ল আমি ঘুমাব পাৰো নে কথাটো প্ৰবেশ কৰিব পাৰো নে যেতিয়া আমি মে ইউজ কৰো সেইটো জানাই তোমালোকে স্কুলত ইমান দিনে কৰি আহিছা নহয় জানো আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন টু নেক্সট সেন্টেন্স আছিলে he should run fast when he was young okay so ইয়াতে should to ইয়াতে ভুল হয় ইয়াতে হ'ব could কি পাৰিলে হয় when it comes to like a he could have when it's like when it you know somewhere expresses the very feeling of he could have done this he करिबो पारिले হয় वो कर सकता था जब भी आपको ये वाला फीलिंग आएगा ना कि हाँ वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया वो कर सकता था कर सकता था उस जगह पे डायरेक्टली आप लोग क्या मॉडल यूज करेंगे डेफिनेटली could यूज करेंगे ठीक है सो he should run fast when he was young so जब वो मतलब अपनी यंग एज में थे तो उसी समय उसको अच्छे से दौड़ना मतलब खेलना कूदना चाहिए था ठीक है then now you can't use your should so definitely it will be like could all right कर सकते थे उसी वक्त पे কৰিব পাৰিলে হয় হেখিনি ক্ষেত্ৰতে কি ইউজ কৰিম আমি could okay ইয়াতে এৰৰটো দেখা দিছো মই কাৰেকচনটো কৈ দিছো next sentence is it must rain but the sun is shining okay so yate ki hobo keteo must no must is a kind of like you know it's a necessity but here this sentence whenever you just the thing is to you know to strike okay to strike he strike koribole yate proper model ki to use hobo kunto use hobo hetu strike koribole hole tumaloke sentence to ki koribo lagibo dubar kor poribo lagibo so I suggest you to this read this particular sentence twice all right so it must rain but the sun is shining so yate must to bhul hoy so yate hobo it might rain karon etu ki hoy possibility ba probability kotha koise remember moi list khon je disilo ekhini tumaloke dhuniya ke sai loasun ekhini bhalke sai loa thik ase ekhini bhalke sai loa clear hoise ami next slide le goisu next slide that is the expected and previous year questions carefully mixed tense so now move on to the tense kyo yate tense or gute formations bilakor logote etu tense or karon to etu yate correct tense use kora logote moi ya formation I am going to in this class I am also going to you know discuss about the formation as well and I am going to explain about the tenses as well okay so first ki hoy yate ki question this side me fill in the blanks with the correct form of the verb given in brackets so this a question to ketia ahisile 2019 or paper khonot ahisile thik ase a proshno to ketia ahisile 2019 khonor 19 or ki hoy paper khonor CBSE paper ahisile board so question to ki asile swa the art within that bracket what is the verb is revolve okay the art revolve around the sun so I suggest you to read the entire sentence twice all right dubar koi pori saba so the thing is we have to know about the conditions and about the formations and also what to say also we have to analyze each and every tenses all right the types of tenses kyo hol ki na ami meaning to buji pabo lagibo so the thing is the art when it comes to the art revolve around the sun so it's what kind of sentence is this it's like universal truth it represents what it indicates universal truth right और universal truth और sentence hole ki hoy ओके आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ का जो होता है जो सेंटेंस होता है वो कहाँ पे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का 3 कंडीशन होता है फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए सिंपल hence I am talking hence I have
mentioned that I am going to, in this class I am going to provide you the detailing, each and every minute detailing regard. It's not that I am going to solve the entire tense questions and I am going to provide you these are the commas that now you all these things that you have to by heart it all and on by yourself. It's not like that. I am going to make it clear for you. I am going to make it clear for you. All right. So the thing is, it's come to universal truth. Somewhere we know that the earth revolves around the sun, right? When it comes to universal truth, then definitely we have to look at the very first what subject, right? The earth. The earth itself is third person singular number, right? And when it comes to the verb, and in case of simple present tense, because it's universal truth, we know that there are three conditions for simple present tense. One is universal truth, another one is habitual action, then another one is fixed timetable. Okay, then another one is fixed timetable. All right. So I have mentioned it already. So what will be the correct answer? The revolves. The earth revolves. You have to put this S. Along with this revolve. Why? Because the earth is a third person singular number, and in case of simple present tense, in third person singular number, you have to put S or ES in case of third person singular number. Okay, while solving the very tense on simple present tense. All right. I hope it's clear for you. Similarly, suppose he goes to school by bus. I am suggesting you. Mane moi tomako eta example di disu. He goes to school by bus. He goes to ki hoy? Eraser disu moi uswa. He goes to school by bus. School by bus. So ইয়াতে কি হৈ যায় এই সেন্টেন্সটো কি হৈ যায় habitual action হয় মানে কি বাসে দিয়ে হলাই কি হয় স্কুললৈ অহা যোৱা কৰে ৰাইট সো ইয়াতে কি হৈ যায় habitual action হৈ যায় ৰাইট সো ইয়াতে কি হ'ল হে দেখিছানে হি কাৰণ হিটো আমি গম পাও হি ইজ এ থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ ৰাইট সো হেইভাবে কি হৈছে ইয়াৰ লগত এই ভাৰ্বটোৰ লগত s বা es কি হৈছে প্লাস হৈ গৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হ'ল হি গোজ টু স্কুল বাই বাস সো ইয়াতে কি হ'ল we know that the another condition of simple present tense is okay that is habitual action so you may get this very question in like that he go within that bracket you will get this very he go now you have to correct the verb for this particular sentence okay so correct form of the verb then it will be he goes I hope it's clear for you now let's moving on to the next question that is I finished my homework before my friend arrived okay it was asked in CBSE 2022 question paper all right so I finished my homework before my friend arrived see the thing is you have to look twice you have to give it a look twice first of all যদি তোমালোকে এবাৰতে ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰা যদি এবাৰতে বুজি পালে তেনেহলে দুবাৰ কৈ চাবা দুবাৰ কৈ পঢ়িবা তো ইয়াতে কি হয় এই বস্তু গুটে কোৱেশ্চনটো ওলাই গুটে তোমালোকে সেন্টেন্সটো পঢ়িলোৱা I finished my homework before my friend arrived ইয়াৰে এটা পাৰ্টত ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে ইয়াতে arrived আছে সো ডেফিনেটলি ইয়াৰ টেন্সটো আমি এটা টেন্স উলিয়াই ললো ইয়াৰ এটা টেন্স আমি উলিয়াই ললো ইয়াৰ এটো টেন্স কি হ'ব এটো past হৈছে গম পাইছানে so here you can see that there are two actions in this particular sentence ইয়াতে দুটা action হৈছে দুটা কাম হৈ আছে so यहाँ पे क्या हुआ है ये entire sentence में आप लोगों को शायद आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे दो काम एक साथ हुआ है ठीक है लेकिन दोनों ही काम कहाँ पे हुआ था अतीत में हुआ था ठीक है दोनों ही काम लेकिन इन केस में इस सिचुएशन में आप लोग कौन सा मतलब प्रॉपर सेंटेंस यहाँ पे कौन सा प्रॉपर टेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट का एंटायर क्या होता है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ठीक है सो द थिंग इज क्या करना है यहाँ पे when you just get the two actions okay and you get the one hint that is somewhere it's suggested that it regards it belongs to the past tense all right so now you have to figure it out which action happened first which action took place first okay समझ में आया वो मतलब पास में जो हो गया है उस पास में मतलब हो गया ये दोनों ही काम पास में हो गया ठीक है इन दोनों कामों में से जो काम पहले खत्म हुआ था उसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे पास्ट परफेक्ट अप्लाई करेंगे ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है ये आते रहते हैं ठीक है ये बहुत कॉमन है और ये आप लोगों के मतलब सीबीएसई पेपर में बार बार मतलब पूछा जाता है ठीक है सो I dash finished my homework before my friend arrived. Here you get this very indicate one hint that arrived. It will be definitely past tense. So here what is the formation of? Definitely this sentence is the past perfect. What is the tense of this particular sentence? It is past perfect tense, right? So I had finished. It is past perfect for of the two past action. मैंने बोला ही था दोनों काम पहले खत्म हो गया है लेकिन उन दोनों कामों में से जो काम पहले खत्म हुआ है उसमें आप लोग क्या अप्लाई करेंगे पास्ट परफेक्ट अप्लाई करेंगे और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन क्या था सब्जेक्ट था प्लस हैड था राइट प्लस क्या था मेन वर्ब ट्री था राइट और क्या था प्लस ऑब्जेक्ट राइट वही हुआ
सो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड राइट. ओके, सो उनका दोस्त बाद में आया था, लेकिन उसने क्या किया था, उससे पहले ही मैंने उससे पहले वो पूरा अपना होमवर्क क्या किया था, खत्म कर लिया था. ठीक है, सो हेंस आई हैड फिनिश्ड. ओके, हेंस आई हैड फिनिश्ड. ऑलराइट, आई हैड फिनिश्ड. ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा हुआ है. ठीक है, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. ऑलराइट, ओके, अच्छे से ध्यान दीजिए. चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. ठीक है, alright, now another question. She does live in this city since 2010. So it was asked this question. This question was asked in the year of 2020. So she does live in this city since 2010. Then definitely, okay. First of all, you have to figure it out the tense of this particular sentence. Then just move on to format. So definitely, when you get this kind of sentence, suppose this tense indicates about an action which started in the past and continues till present day. I hope you get my point. Okay, पहले आप लोगों को जब ऐसा कुछ सेंटेंसेस मिलेगा, ठीक है, पहले आप उसका मतलब क्या करेंगे, उसका टेंस डिफाइन कर लीजिए, उस सेंटेंस का टेंस डिफाइन कर लीजिए. ये आपका पहला ड्यूटी होगा, पहला जॉब होगा whenever you are just going to solve the entire questions regarding tenses. Alright, so पहले आप उसका टेंस क्या कर लीजिएगा, फिगर आउट कर लीजिए, उसके बाद टेंस का फॉर्मेशन याद कीजिए. तो बेसिकली ये टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस. नाउ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसके लिए आइडिया भी तो होना चाहिए, राइट. नाउ आप लोग मुझे ये सवाल कर सकते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है बेसिकली, और इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन में वो लोग गलती करते हैं, इसलिए करेक्ट इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली आप लोगों को वो सेंटेंस फॉर्मेशन का होल आइडिया क्या करना है, क्लियर करके रखना है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू द व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इट डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टिल द प्रेजेंट इटसेल्फ. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो एक ऐसा मतलब वो ऐसा होता है ना कि ये एक ऐसे काम के बारे में वो लोग बात करते हैं, वो काम पहले ही शुरू हो, मतलब पास्ट में वो शुरू हो चुका है. ठीक है, पास्ट में शुरू हो चुका है, लेकिन वो अब तक चल रहा है. पास्ट में শুরু হতে वो अब तक चल रहा है. বুঝি পাইছা নে যে অতি অতি আৰম্ভ হোৱা কাম এটা বৰ্তমান সময়লৈ চলি থাকিলে সেইটো কি হয়, প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট এণ্ড কন্টিনিউয়াস টেন্স, ৰাইট. সো what will be the correct answer? আমি জানো যে ইয়াৰ ফৰ্মেশনটো কি আছিলে, স্ট্ৰাকচাৰ. I am going to provide you the structure as well. What is the structure of present perfect and continuous tense? That is subject plus, it will be have slash has, okay, plus been, okay, plus verb ing, okay, plus object. All right, plus object. Then hence she has been living. All right, she has been living, present perfect with for action continuing from the past. All right, hence the correct answer will be she has been living in this city since 2010. I hope it's clear for you. Let's moving on to the next question. That is question, by the time the doctor reached, the patient died. Okay, so definitely it was asked in 2018. So by the time the doctor reached, somewhere you have got it already. So somewhere indicates past tense, right? Later part past tense, and definitely two actions happened already. Remember, I told you about the formation. What do you mean by past perfect tense, and also the formation regarding. Suppose that both of these two actions happen in the past tense, but between those two actions, the action that happened first place, that occurred first place, and that finished, it was finished, then definitely you are going to apply this very past perfect tense in that particular part. All right, I hope it's clear for you. Suppose sequence of past events, you will get the sequence of past events. In here the sequence, you get this two of the sequence of past events, right? But between those past events, you have to apply the past perfect tense to that sentence, to that action, okay, to that event when you are just so, and you for that you have to figure it out, that you have to figure it out the action that happened at first place. All right, जो पहले ही खत्म हो गया, दोनों ही पास्ट इवेंट्स हो गया. ठीक है, दोनों ही पास्ट में हुआ था, और उन दोनों कामों में से जो काम पहले खत्म हुआ, जो काम पहले हो गया था, उसमें आप लोग पास्ट परफेक्ट अप्लाई करेंगे. सो बाय द टाइम द डॉक्टर रीच, द पेशेंट हैड डाइड, मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही वो मर गया. ठीक है, clear is it? I hope it's clear for you. I hope it's clear for you. Okay, moving on to the next slide.
That is okay. Another question. Look, the boys play football in the park. It's very simple. This present continuous tense. Look, because look जब भी बोल रहे थे look, definitely वो अभी के बारे में बात करें. Look, it eventually indicates the moment we just read this entire sentence and definitely you get this look, then definitely it will be like look. Look, definitely ये क्या होगा? Present tense में हो रहा है कोई आपको ये अभी देखो जब मैं बोलती हूँ कि अभी देखो डेफिनेटली हम लोग प्रेजेंट अभी ये प्रेजेंट में है isn't it? Okay. So look বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাওঁ যে আমি এতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্সতে আছো নহলে কাৰোবাক কম নেকি চাইছিলি নে সেইটো পাষ্টত হৈ যায় চানা বুলি কোৱাৰ লগে লগে গম পাইছে যে এইটো এটা কনভাৰসেচন চলি আছে দুজনৰ মাজত আৰু ডেফিনেটলি এইটো কি হয় প্ৰেজেন্টতে আছে আৰু লুক এটা প্ৰেজেন্টটো ইন্ডিকেট কৰিলে এই ৱৰ্ডটো দা বয়জ প্লে ফুটবল ইন দা পাৰ্ক ডেফিনেটলি ল'ৰাকেইটা কি হয় চাচোন ল'ৰাকেইটা খেলি আছে মানে কি হয় ফিল্ডত ফুটবল খেলি আছে তো ডেফিনেটলি দিস প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স and what is the formation of present perfect tense? It was subject plus okay am/is/are okay plus verb ing asile hoine so the boys are playing hoise hoine happening now. Okay, I'm moving on to the next slide. I hope it's clear for you. Another one is error correction. You may get this error correction table in your exam. So identify the error in tense and provide the correction as well. He has gone to Delhi yesterday. Okay, you have to figure it out the what is the error in that particular sentence, what is wrong about that particular sentence. So you can see this yesterday and here they use this he has gone, then definitely it will be wrong because when it comes to yesterday definitely indicates the simple past tense and he has gone indicate the present perfect tense, right? So error is has gone, so correction will be when, because it comes to yesterday definitely it is simple past. So simple past mein hum log kya use karenge? When. Yesterday requires simple past. I have also provided the reason as well. All right, I have provided the reason as well. All right. Okay. The next is okay. Next question is next sentence is I am know him for 5 years. No, definitely am know is the wrong one. आप किसी इंसान को 5 साल से जानते हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली रिमेम्बर मैंने क्या बोला था, जो पहले हो चुका है, जो अब तक चल रहा है, वो टेंस कौन सा वाला टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस. और यहाँ पे करेक्ट होगा आई हैव नोन. ओके, एंड फॉर रिक्वायर्स परफेक्ट टेंस, ये याद कीजिए. फॉर 5 years सिंस मॉर्निंग, ये वाला होने से आप लोगों को इधर ये क्या होगा? परफेक्ट टेंस ही होगा. इधर इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट और इट विल बी पास्ट परफेक्ट में नहीं होता है वैसे कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में ही ज्यादा टाइम होता है. प्रेजेंट परफेक्ट नॉट एक्जैक्टली प्रेजेंट परफेक्ट, इट्स एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है? So why it is have known? So you may ask this very questions. तो हम लोगों को तो पता है कि present perfect continuous का formation था subject plus have slash has plus been plus verb ing. तो यहाँ पे know में ing क्यों नहीं हुआ? इस verb में ing क्यों नहीं हुआ correct form में? क्योंकि ये एक verb है, ये know एक verb है जहाँ पे आप लोग ing नहीं put कर सकते, ठीक है? So correct answer will be I have known. All right. Then next, when I reached home, it is raining. ओके, सो देखिए ये वाला आप अच्छे से पढ़िए. यहाँ पे क्या है? आई रिच्ड. द मोमेंट यू गेट दिस वेरी वर्ड रिच्ड देन डेफिनेटली आपको ये समझ में आया कि ये पास्ट टेंस में है. लेकिन यहाँ पे देखिए एक दूसरा पार्ट में इट इज रेनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हो ही नहीं सकता. इधर इट विल बी पास्ट कंटिन्यूअस, इधर इट विल बी पास्ट परफेक्ट. हमको पता चलेगा ये यहाँ पे गलती ये हुआ है, ठीक है? इधर is यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे was. ओके, मेन verb reached is in past tense. मैंने बोला था ना कि आपको the moment you get this entire sentence, okay, you have to read it twice. आप लोगों को कुछ ना कुछ तो hint मिल ही जाएगा उसमें, ठीक है? Then next question is water is boiling at 100 degrees Celsius. All right. So okay, is boiling. Okay, ये is boiling, ये गलत है क्योंकि ये वाला तो क्या है? ये ट्रूथ है. वाटर हमेशा क्या होता है? उबलने का तापमात्रा को हम लोग को पता है, राइट? इट्स 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो यहाँ पे होगा बॉइल्स इज द करेक्ट वन, साइंटिफिक फैक्ट, एंड इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. Moving on to next slide, you can get the screenshot. Take the screenshot of it. Next is okay, sentence transformation expected pattern. एक्सपेक्टेड पैटर्न इस साल ऐसे भी आप लोगों को सवाल आ सकता है, मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है? रीराइट द सेंटेंसेस डायरेक्ट. ये है आई हैव सीन दिस मूवी सेड राहुल.
सो इनडायरेक्ट में क्या होगा देखिए राहुल से दैट ही हैड सीन दिस तो ये होगा ही हैड सीन दिस ओके बिकॉज क्या है यहाँ पे क्या है ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट जो है तो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट क्या होगा पास्ट टेंस में है तो एंटायर सेंटेंस रिपोर्टिंग वाला के रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार मतलब अनुसार ये चेंज होता है ठीक है तो ये आई हैव सीन जो हुआ ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में था जस्ट बिकॉज द रिपोर्टिंग पार्ट इज इन पास्ट टेंस तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सो डेफिनेटली राहुल सेड दैट ही हैड सीन दैट मूवी सो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट इन रिपोर्टेड स्पीच ये वाला कॉमन है ये कॉमन है आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा टेंस कन्वर्जन मैं आपके लिए और सारे वीडियोस भी लेके आऊंगी इन 3 दिनों ठीक है रिगार्डिंग दिस स्पीच ऑलराइट रिगार्डिंग दिस स्पीच ओके आप लोग बस देखते रहिएगा ठीक है नेक्स्ट हियर कम्स टू टेंस नेम एंड फॉर्मूला एंड की सिग्नल वर्ड्स ऑलराइट so I'm suggesting you about the simple present tense that is subject plus verb it is like always usually everyday and facts regarding the universal truth regarding the universal or the habitual as well habitual में आप लोगों को usually everyday ये सारे he always goes to school by bus ये सारे आप लोगों को मिल सकते हैं ठीक है और सिंपल पास्ट का फॉर्मेशन देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यस्टरडे एगो यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे how you are going to that strike how it going to strike that this is the tense of this very sentence is this or is that like that then definitely when you get this these are the hints hence I provided you the key signal words all right so you will get this yesterday ago last year when you see this very words in 1947 then definitely it indicates simple past tense do remember that factor all right next one is present perfect that is the formation of present perfect is subject plus have slash has plus verb 3 so when you get these very keywords like just already yet recently he has arrived just now something like that these are the key signal words to indicate this very tense present perfect tense all right now it comes to past perfect that formation is subject plus had plus main verb 3 when you get this before after when comparing two past tense when you just get this very comparison of two past tense you know I had finished my homework before he entered or something like that definitely before when you get to see before after these keywords and comparing the two past tense definitely in case of past perfect tense you will get the two actions and you have to choose about the action that happened first okay about the sequence all right within those between those past sequence all right so these are the key factors key signal words that you have to remember about particular tenses all right so I hope it's clear for you I hope I made it so easy for you okay I'm going to provide you the questions regarding this speech as well so till then just stay tuned so you have to subscribe our channel as well all right मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम अच्छा ही होगा तो नेक्स्ट आप लोगों का क्या है 21 फरवरी को इंग्लिश एग्जाम है तब तक आप लोग ये सारे वीडियो जितने भी है अगर कमेंट्स में आप लोग डेफिनेटली मुझे पोस्ट कर सकते हैं कि इस पार्ट का आप लोगों का वीडियो चाहिए या यू कैन एनी सजेशंस एंड फीडबैक्स आर वेलकम ऑलराइट सो तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए ठीक है टेक केयर ऑलराइट एंड अच्छे से क्या कीजिए प्रिपेयर कीजिएगा ठीक है प्रिपेयर कीजिएगा टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर थैंक यू আশা কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক হৈছে যদি আপুনি এই বিষয়টো আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে তে আমাৰ কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্সসমূহৰ এনৰোলমেন্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পলম নকৰি আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰক অথবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে